और हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ है 4 बजने में। अभी टेक फोटो। मैं तो पागल हो रहा हूँ बार बार इस कैमरे का व्यू देख के। Now my butt feels very comfortable. I am falling in love with this camera. Not me. Because they have called us for collaboration, so we are not paying anything. Now, do we have anyone from Western New Zealand, I mean Australia here? Again, we're not getting any younger. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में, वो भी नए कैमरा के साथ जो कि है Insta360 X5। तो भाई मुझे नहीं पता मैं कैसा शूट करने वाला हूँ। मैंने जितनी थोड़ी बहुत बिगिनर लेवल की इसकी वीडियोस देखी हैं उससे मुझे जितना समझ में आया उतना मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है। धीरे धीरे सीख जाऊँगा। पिछला भी जो कैमरा था उसमें भी मैंने थोड़ा अपना टाइम लिया था सीखने के लिए, तो इसमें भी भाई देख, पहली बात तो अभी खाली 7 या 8 दिन हुए इस कैमरे को रिलीज़ हुए, तो ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज वैसे भी नहीं है अभी लोगों को। तो जितनी भी मेरे को वीडियोस दिखी इसकी यूसेज की कि कैसे आपको यूज़ करना है, ये बिगिनर्स गाइड इसकी मैंने चेक करी, जो भी कुछ चेक किया उससे मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। देखते हैं कैसा रहता है। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रोटोरुआ और वहाँ पे है ते पुइया। एक व्हाट इज ते पुइया? कैन यू एक्सप्लेन देम? Oh, yo. Yeah. It's a place where you can see the thermal views, just heated up pond, and then there's a fountain which only shoot 15 times per day, and they have the Maori performance, they have some food. Yeah. They have haka, very good buffet। और वहाँ पे वही मतलब कि माओरी कल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हैं, तो उनके साथ हमने किया है कोलैबोरेट और हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे हमको सारे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे। वहाँ पे हमको उनके साथ जितना भी उनके कल्चर के बारे में वो बताएंगे, हमें दिखाएंगे, वो देखने को मिलेगा और आपको दिखाएंगे। उसके अलावा हम वहाँ पे बफे एंजॉय करेंगे। और सबसे मेन है कि इस कैमरे का फर्स्ट ट्रायल हम आज वहाँ पे करने वाले हैं। तो देखते हैं भाई कैसा रहता है। मैं कुछ गलतियाँ करूँगा या नहीं करूँगा वो मुझे पता लगेंगी पोस्ट में जब मैं इसको एडिट कर रहा हूँगा। बाकी प्लीज़ बेयर करना मेरे साथ। धीरे धीरे इस कैमरे को मैं अच्छे से यूज़ करना सीख जाऊँगा, बट ट्रस्ट मी बहुत सही कैमरा है। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपने बायो में मेंशन किया हुआ है, यूट्यूब के भी और इंस्टाग्राम के भी। अगर आपको चेकआउट करना हो मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो आप इसको खरीदने के लिए। सो लेट्स गो। ओके, यू ड्राइव। निकल पड़े हैं रोटोरुआ के लिए और साथ में ले ली है अपनी मचा कॉफ़ी। अमेजिंग टाइप। और रास्ते का जो टाइम है वो है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे भाई रोटोरुआ और ते पुइया में जाके मचाएंगे फुल ऑन मज़ा भाई। ते पुइया देखो, वैसे सही बताऊं तो देखा जाए तो कल्चरल जगह है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा कुछ आप एडवेंचर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आप कहीं ऊपर से कूद रहे हो, कहीं पानी में कूद रहे हो, डाइव मार रहे हो, नहीं। लेकिन कल्चरली बताते हैं बहुत सुंदर जगह है। जो भी रोटोरुआ जाता है तो वहाँ पे एक ना एक बार जाना बनता है उसका, ठीक है। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको माओरी कल्चर के बारे में पता लगेगा, उनके मरायास क्या होते हैं, हाका परफॉर्मेंसेस क्या होती है, उनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता लगेंगी। तो अगर आप रोटोरुआ कभी जाएँ तो एक बार आप होके ज़रूर आ सकते हैं वहाँ पे, मेरे को ऐसा लगता है। तो 2.5 घंटे बचे भाई, देखते हैं 2.5 घंटे बाद कैसा माहौल रहेगा वहाँ पे। तो भाई रास्ते में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और इस कैमरे का व्यू देखो यार, मैं तो पागल हो रहा हूँ बार बार इस कैमरे का व्यू देख के। पता नहीं ये मेरा खुमार जो है इस कैमरे का वो कितने आने वाले अगले व्लॉग्स तक नहीं उतरने वाला, लेकिन मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ भाई, मैं इस कैमरे के साथ प्यार में पड़ चुका हूँ, ठीक है। आई एम फॉलोइंग इन लव विद दिस कैमरा। Not me. I have already fallen in love with you. Let me have a new love affair with this. It's shooting so good. भाई इतना कमाल का गजब का इसका एक तो शॉट टेकिंग वो है ना प्रोसेस। बेस्ट चीज इस कैमरा की बताऊं क्या है, हम कई बार जब कहीं पे भी घूमने जाते थे और अगर मैं अपना कैमरा इसके हाथ में पकड़ा देता था कि भाई ले शूट कर, तो ये इतनी ज्यादा है ना, मतलब इन चीजों में ध्यान देती है, मजा लेती है। तो अपना कैमरा वैमरा इसका किस एंगल में था किस में नहीं, सब कई बार फुटेज खराब हो जाती थी।
लेकिन इस कैमरे के साथ अगर मैं इसको ये कैमरा पकड़ा दूं, डजंट मैटर इसने कौन से एंगल में पकड़ा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि ये 360 डिग्री शूट कर रहा है। एडिट में जब मैं बैठूंगा तो मैं जो चाहूँ वो फ्रेम सेट कर सकता हूँ। इतना बड़ा फायदा है भाई इसका। ये जो फीचर है सच में गजब है। स्फेरिकल व्यू शूट करता है। मतलब अगर मैं इस कैमरे को भी सामने देखो, आपको पता नहीं लगेगा बिल्कुल भी जब मैं इसको एडिट करके डालूंगा। मैं सच में इसकी स्टिक को इधर उधर हर जगह घुमा रहा हूँ, सामने कर रहा हूँ, वर्टिकल कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एकदम क्लियर शॉट इसमें मिल जाएगा। स्टेबलाइजेशन, कैमरा स्टेबलाइजेशन का तो पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा गजब की। बाकी आपको दिख ही जाएगा आगे की फुटेज में। रोटोरुआ पहुंच चुके हैं भाई, लेकिन अभी यहाँ से 50 किलोमीटर और आगे जाना है हमको ते पुइया जाने के लिए। और ये डॉग आपको याद होगा, हमारी पिछली कई वीडियोस में भी दिखा है पहले भी। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं एक दो बार, जिस तरह सामने कैफ़े है वहाँ से अपना आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए या वॉशरूम हमको यूज़ करने हो तब भी हम यहाँ पे रुक जाते हैं। या यार बस और 50 मिनट की बात है, पहुँच गए हैं भाई। पहुंच गए हैं भाई अपनी कैंप साइट पे। तो ये रहेगी कैंप साइट जो कि है तस्मान हॉलीडे पार्क। तो जब भी आप रोटोरुआ आओ तो आप यहाँ आ सकते हो। इनके पास खुद का अपना हॉट पूल है, बहुत ही अच्छी कैंप साइट है यार, जैसा कि आप देख ही पा रहे होगे। देखो, और अभी आपको हॉट पूल भी हम दिखा देंगे जब हम हॉट पूल में जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपना पहले टेंट पिच करना है, क्योंकि हम कुछ ही देर में निकलेंगे ते पुइया के लिए। तो जल्दी जल्दी टेंट पिच करते हैं एंड देन वी हैव टू लीव। लेट्स पिच आवर टेंट एंड देन वी हैव टू लीव, राइट? वी कैन शो द रेस्ट ऑफ द कैंप साइट लेटर ऑन, ईदर इन द इवनिंग, no, but in the evening we are coming late night. So probably tomorrow morning we'll be showing you their hot spa and all this property. हमारा जो टेंट है वो हमने पिच कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ है, 4 बजने में अभी 1 घंटा है। तो इतनी देर में हम आपको इस हॉलीडे पार्क का टूर करा देते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है यार। तस्मान हॉलीडे पार्क इन रोटोरुआ। मेक श्योर अगर आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ रुक सकते हो। नॉन पावर्ड कैंप साइट्स पे अगर आपको रुकना है तो आपके लगेंगे पर पर्सन के कुछ $22-23, ठीक है। और डिपेंड करता है, अगर आपको कैबिन लेना है, मोटेल रूम लेना है, पावर्ड साइट लेना है तो उसके अलग अलग प्राइस है। ये देखो, ये है जंपिंग पिलो, बच्चों के लिए बहुत सही रहता है, बहुत मज़ा आता है भाई बच्चों को इस पर कूदने में। और बच्चों को क्या, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे तो मैं भी इस पर खूब कूदा हूँ। चलो आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये है पावर्ड साइट्स। यहाँ पे कई लोगों ने अपनी आरवीज, कैंपर वैन्स खड़ी कर रखी हैं। ये आपका जंपिंग पिलो हो गया, और ठीक हमारे सामने है हॉट पूल्स। तो यहाँ पे अपने रहेंगे हॉट पूल्स। तो दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और उसके ठीक अगर आप आगे देखोगे तो वो है स्विमिंग पूल। वहाँ पे वो गर्म पानी नहीं है उसके अंदर आपको मिलेगा सिर्फ ठंडा पानी। कई लोग तो वही घुसे हुए हैं ठंडे पानी में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हॉट पूल, और ये है अपना नॉर्मल पूल, जिसमें पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है। और ये अपना लाउंज हो गया, किचन एरिया हो गया, ये अपने केबिन्स हो गए अगर आपको रुकना है। एंड देन यू हैव दिस एरिया ओवर हियर, दिस इज द स्टाफ, लवली स्टाफ ऑफ तस्मान हॉलीडे पार्क। एंड देन over there you can see the kids area, which is again nice place. Let me show you. ये है आपका किड्स एरिया, तो यहाँ बच्चे अपना आराम से खेल सकते हैं, चिल कर सकते हैं। और ये यहाँ पे बने हुए हैं टॉयलेट्स और शावर, और एंट्रेंस पे भी एक आपको फैसिलिटी मिली हुई है टॉयलेट्स और शावर की। तो 2 जगह हैं जहाँ पे आप आराम से
शावर्स ले सकते हो, तो आपकी कैंप साइट के हमेशा पास में एक ना एक टॉयलेट ज़रूर रहेगा। बढ़िया यार, अच्छा कैंप साइट है। साथ में यहाँ पे ये सैंड बैग थ्रोइंग गेम, ये भी आपको दिखाता हूँ। देखा होगा वैसे आपने, कई बार टीवी पे दिखाते रहते हैं, वैसे बोर्ड पे होल होता है, उसके अंदर आपको ये सैंड बैग फेंकते हैं। Almost. Both of them at the same place. Yes. This side of the camp has the powered campsite, and that side has non-powered campsite. But this side, they still have powered campsite. Yeah, very spacious. Yep. लेकिन ध्यान रखना भाई, अगर आप सैटरडे या संडे को आ रहे हो तो पहले से बुकिंग करके आना, वरना यहाँ पे सब कुछ पैक्ड हो जाता है। वीकडेज़ में ऑल राइट, वीकडेज़ में तो आप कहीं पे भी जाओ न्यूजीलैंड में आपको हर जगह अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन वीकेंड्स में आपको हर जगह कम से कम 5 से 6 दिन या हो सके तो उससे भी पहले आप बुक करा के जाना, ठीक है। Shall we go and eat something before we head to Te Puia? Yeah, that's Because once we go there, we'll start our tour and then buffets in the evening. Are you feeling hungry? Little can eat something. Okay then, you are feeling little hungry. Your little one is feeling little hungry. That means a lot of hungry. Our little one. Okay, our little one. No, I'm not denying that. Let's go then. ये देखो कैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना जंपिंग पिलो पे। ये है भाई उम्र तो असली मजे की, कोई चिंता नहीं। तो भाई यहाँ पे हम आ गए हैं वियतनामीज रेस्टोरेंट में खाने अपना बामीज, और उसके बाद हम निकलेंगे। वी आर जस्ट ऑन टाइम, राइट? वी आर रनिंग दिस रेस अगेंस्ट द टाइम बिकॉज they said it's going to take at least 15 minutes to make our bamis, and then it's already, let me tell you the time. 3:30. Yeah, it's 3:13, so 15 minutes and then we have to reach to Te Puia, और हमें वहाँ पे 3:50 तक पहुँचना है। तो देखते हैं, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है ये। जब भी हम यहाँ पे आए हैं रोटोरुआ, तो ये हमें शाम को पैक्ड मिलता है, और आज थैंकफुली हमें जगह मिल गई। Yeah, really good one. यहाँ की बामी बहुत अच्छी होती है, ऐसा हमने सुना है, आज खा के पता चलेगा। We have heard that the bamis over here are really good. Let's see and try today. Here, last time we been here, Yeah. but we cannot find the spot. Yeah, So full. I just told them. Oh yeah. But are you excited for Te Puia? Yes. Never been there. That's why a lot of times never went in. These are so expensive. Today it's going to be a little different because they have called us for collaboration, so we are not paying anything. But देखते हैं यार कैसा रहेगा। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, मैं ये नहीं है कि भाई उनके साथ कोलैब कर रहा हूँ तो आपको कुछ भी बताऊँगा, क्योंकि पैसे तो दे नहीं रहे मुझे, सिर्फ एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो उस एक्सपीरियंस की बेस पे, या अगर पैसे दिए भी होते तब भी मैं आप लोगों के साथ धोखा नहीं करता, आपको मैं सच बताता हूँ। थैंक यू सो मच। बामीज खा लिए भाई, और अपना एवोकाडो शेक हमने टेक अवे करा लिया है। परफेक्ट टाइम है अपने पास, आराम से अब हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे ते पुया, एग्जैक्टली 15 मिनट पहले, और फिर अपना शुरू हो जाएगा टूर। ये देखो मावरी मरायाज में आप जब भी जाओगे तो आपको इस तरीके की कुछ एंट्रेंस दिखेगी। अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, हमें ऑफिस मिला नहीं है, but I guess this is the one. Have invited us Somendra Solanki. Did you guys be doing the full combo? Yeah, this one. The full combo one where there is buffet and then night geyser. Was it this name here? Yeah, that's me. Looks good, right? I will be sitting at table number 12 tonight. So you'll start with the tour just in front of the big screen next door at 4 o'clock. Okay.
Once it's done, that's when you both will head straight to the restaurant. Ah, There you go. the restaurant is that one which is outside. Restaurant, yep. So you'll end your tour in the park. Just where you end it, you'll see the restaurant from there. All right. Yeah. Thank you so much. ये है भाई इनका जहाँ पे गाइडेड टूर स्टार्ट हो गया. Think of like charging bank stations over there. Yeah. That reminds me of China. Yeah. These kind of charging stations are very common in China, right? Not so common here. Yeah. So now we will be waiting for next 10 minutes before our tour starts. Good evening, ladies and gentlemen. All I said was hi and welcome to my place. How's it going? Kia ora. Kia ora. Awesome. So what we'll be doing together, I believe I will be taking you all on the guided tour this evening. Now there's 3 parts basically to this in our 90 minutes. We are going to go and visit again the 3rd largest geyser in the world in our back doorstep. Now this is a live shot of what we're going to go and see. Now it's saying that everything, if it looks hot, it is hot basically. So please take care while we are down in our hot and smelly part of our tour. Then once we finish down there, going to visit our Kiwi house, our funerals and also our geyser, we will come up to our school here as well and introduce you to again our Institute NZ Maki, where we produce the things that you see around you, but also our architecture as well. Now also for those who are going to the dinner and the show, yes? Alright, so majority of all of you, so welcome. So I will get you to that, to the evening guide tour this evening as well. So we are going to, split into 2 groups. So I will take the first group with me and then split into, again, my other colleagues as well. So with that, please ask questions, take as many photos as you like. Again, so with that, come on out first. Thanks. Come on out. Hi. Hello. Kia ora. Hello. Tēnā koutou. Tēnā koe. Tēnā koutou. Hi folks. To answer your questions. Now can we say waka? Waka. So waka is the short version of te whakarewa rewatanga o te ope taua a Wāhiao. All waka. So simply meeting the war parties, the war dances, the war parties of Wāhiao. So roughly, let's say 300 years ago, this ancestor resided here. So welcome firstly to Rotorua, Nui a Kahumata Momoi. So how the tribal system works here is our main tribe is called Te Arawa. Under there we have 8 sub-tribes or 8 beating hearts we call Ngā Pū Manawa E Waru. On this side of the lake we have one of those beating hearts, and our other 7 are located around our big and little lakes of Rotorua here. So this is our tribal group. Now in terms of tribes, back in the day, let's say from anywhere from the 900 period, 11, 12 sort of century, we've been travelling from the Pacific around and of course landing here. So roughly 7 to 8 tribal groups, or waka equates to 7 to 8 different tribal groups as well. So every tribal group really are unique in their own way. So the uniqueness comes from where we live, where we reside, literally our home. And so that's what makes us again different from one another. So we will utilise everything that is available within our flora and fauna, and I'll show you once we get to our school of what I mean. Now, a little bit of a deeper meaning. Here is an actual photo of our ancestors doing the haka. Can we say haka? Haka. Can you say waka? Waka. Oh, waka haka. Oh, right. So a postural war dance, but it's more also a conditioning dance. So we're actually getting our bodies ready for battle, but also mentally and all that as well. Now we would use sometimes also to emphasize our dances by the way of empty cavities that usually would hold water, feeding many of our systems. Now because we have an empty cavity, when we tucka here or stamp on that cavity, it's like a bell, so it rings. So the other name or the other meaning to this is that when we do our dances, it all echoes up and down our valley here. So again, there's just a little bit of a deeper meaning to waka. Can we say waka? Waka. Awesome. So we're going to waka around our home. All right, come on through. Let's go.
So I'll just get the obvious questions out of the way. How long has this been erupting for, been alive for? So I'm happy to share with you, we also have another family I consider to be my passionate, dedicated and somewhat crazy science friends. Yes. So with the help of our GNS scientists, with the help of Mr. Brad Scott, our local volcanologist here, basically 240,000 years ago, we would be in a great big lake. That lake erupted, creating the Rotorua caldera, or the Rotorua you currently are in. Now, we also, as Rotorua part of our zone, behind us going south, we have our other big lake, Taupo. So the Taupo volcanic zone heads out to our active volcano, Whakaari or White Island. So this is what Rotorua is a part of. Now, do we have anyone from Western New Zealand, Australia here? Hi, thank you for the Olympics. I absolutely loved it. But on a serious note, sorry, my bad. You guys are winning the tectonic plate race, okay? So the Australian plate moving over the Pacific. So again, these literal continents just fighting against each other. So all that energy gets dispersed up and down again through fault lines. So right here we have 4. So that is another additional added. That's why we have this wonderful, alive and also smelly home as well. So whilst living here as a tribal group, but also supported with our science family, roughly 3 to 4 times every hour we will see somewhat of an eruption as well. All natural, I might add, but not like our friends just down the road there who activate their geyser with some sort of special powder. But that has been seen here. So in front of us, the one just to the left with the smaller sort of the steam exiting, that is the number 2, the starting geyser. So roughly about maybe half an hour, I'll promise you that we should see our number 2 beginning, the sign geyser. So his other name is the Prince of Wales. So we got anyone from UK here? Yeah, hello, welcome. So again, when the Duke and Duchess of York came for a visit here in 1926, they got the number 2 geyser as well. So that's what we're going to see. So once we see the number 2, starting getting maybe 10, 15 sort of meters high, good strength, good volume of water, then right next door, number 3, Puiā or Big Splash will start to, and they dance along beside each other basically. Now duration, I have no idea. Can be 15 minutes, can be sort of over an hour. Yeah. Again, that's nature. So from here we are going to go into our Kiwi house. Who would like to see a Kiwi? Oh, yeah. I'll try my hardest, okay? 3 things I find hard working with: nature, animals, and kids. Yeah, that's right. The kids are alright. That's cool. Yes. You alright? Oh, no. Oh, okay. Come on through. So we're going to head into our indoor enclosure. Come on down. अब हम अंदर जा रहे हैं कीवी देखने के लिए. Alright, wonderful. Try and find you a spot to sit around here. The adult. So what we're doing here, 2 purposes. Is we're going to bring our baby up to the ages of 3 to 4. So currently, from the start of this year, this baby was born. Next up, we're going to introduce a male and a female together. Now, the thing is, they have to, somewhat introduce yourselves over a certain period of time. You can't just put 2 Kiwis into one space that will try to unalive each other. Again, that's the nature of them. So this is also what we try and do. We try to introduce them. The things that we'll see is that they'll start calling each other. The male has a wonderful high sort of angelic voice, our ladies, just a lower sort of tone, lower register, still pretty cute. And then they'll start sort of mimicking each other's movements up and down the wall here with our door. Then if things look pretty good, we're going to open that door and hopefully they'll have somewhat of a relationship or a union. Then if they do, we're going to send them out to our outdoor enclosure. Good question. Okay, so with that, please. Thank you.
temperature for one. Oh. So, fumarole, mud pools. You know, we have water and gases that are released from the acid that breaks down literally any type of rock that we have within our area, our home. So, this is what sort of maybe half summer, half getting into winter look. Yes, I'm sure we have that look too. Now, if you haven't had a mud bath before, why would you want to? Well, due to the volcanic nature of this, the mud has somewhat been enriched during that process. So the things we find in here, you know, any types of zinc, magnesium, and those types of things, literally in our mud. So one, it's great for you. Again, we're not getting any younger. You know, I'm sure some of our injuries from our sporting days are coming knocking on our door. You know, any arthritis, great for a reliever, not a cure, but again, great reliever of that. But also, once you add the mud, it does tighten the skin, so it does bring that back that youthful appearance, as some would say as well. Now, to me, these are probably the most dangerous of the systems. They're very sort of slow and sure moving. Now, just in front of us here on the tree line, there used to be the Geysers Hotel there. Well, just this whole area named Ngā Koko made its way under the foundation of that place. And well, as you can see, they had to take it down. Now, these appear again anywhere within our caldera. Just on the corner here, there's a gas station there. Family woke up to one of these outside of their residential home, literally, so they can just appear at any time. The new 8th wonders of the world. Behind that hill used to be the pink, the white and the black terraces on a very mountainous scale. Literally a mountain just like this in front of us here, creating the white terrace as we see in front of us. Now, unfortunately, 1886, our tribal group, part of us, lived there. That erupted again, covering the pink, the white and the black terraces. Now, about 15 years ago, again, having my American family here, I just want to say thank you. 15 years ago, you introduced LiDAR to our world. So again, a technology able to map really anything. We had a diary and a map of the 1800s of, again, that area where the mountain Tarawera was and the Rotorua, the lake. So we were lucky to find a landmark, again, in that period, was still present today. So using, again, the information that we had, triangulated again, and we found the pink and the white and the black terraces, albeit under a lot of earth and water. So very, very cool. What does that mean to me? Well, as that's one place we lived, I just literally had that information, borrowed my friend's boat, we gassed up and just anchored up literally above, again, the white terraces. It does mean a lot because that's where like the likes of yourselves would go and secure your spot. If you knew the next guy's eruption was 5 minutes, you go onto the white terrace. Oh yeah, here's my terrace here, I'll just wait. Oh yeah, you know, and those things, and you go and have your mud bath, and yeah, really cool. So you know, people would come here, but maybe via here into, again, one of the 8 wonders of the world, of the New World. So there we have is our number 2, just in front of us. As I said earlier, when we were at the top there, we would have developed roughly half an hour of superheating in order to come out of our cone geysers. It's the only one type we have here. We don't have a pool geyser yet, but I'm hopeful. But with that, come on down, let's go. I'm happy with the wind direction this afternoon as well. All that water is going into our swimming pool. Yes, the Blueies. It's probably our other sort of English name we have here. Why is it called the Blueies? It's because it's blue. Yeah, we have that in our culture. Just, you know, literally see for what it is. Alright, so here we go. That's the number 2, the Prince of Wales, our starting geyser. I need him to go 3 times that height. Once he gets that height, then right next door, when the main steam is venting itself, that's where Puiā or Big Splash will start, basically. So once he gets to this height, then we'll have this happening. Now duration, we're good, but not that good.
Meaning it can be maybe the same timing of the superheating of the water, or sometimes maybe twice that over an hour sometimes. Literally. So that's what we're going to say. So right now we are just going to go and enjoy this very area. So you have 15 minutes to yourself to explore. Over there we have our hot seats, grabbing all that thermal energy, that thermal heat. You're welcome to go and toast your buns up there, up that pathway. Behind our geysers we also have another lookout and some restrooms as well. So a good 15 minutes for you guys to enjoy this area. Then make your way back over to there. We're going to catch our electric car to the final part of our tour. Alright, come on now. Again, just hold your questions. I'll answer them once we just enjoy this area. You will get the opportunity later after dinner and your show to also come back down as well. Take photo. Take photo. So here's the hot surface and it's heated up naturally. Now my butt feels very comfortable and I want to lie down. तो भाई ये जो पत्थर भी है ना, ये भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉट है, क्योंकि इसके नीचे पूरा गाइजर जो आपको बुला लो वो सब इसके नीचे चल रहे हैं, तो ये सब हॉट है. सी, डेंजर, हॉट सरफेस, प्लीज टेक केयर. Yeah, you can lie down, why not? I'm going to fly the drone.
क्यों आ गया ना मजा ड्रोन फुटेज देख के और साथ में इस कैमरा के अनोखे शॉट्स देख के। और ये तो अभी कुछ नहीं है, इसके बाद तो भी माओरी परफॉर्मेंस बची है, फिर हमारा बफे बचा है, और उसके बाद पूरे दिन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी इसी सेम एरिया में रात को जब हमने अपना ड्रोन उड़ाया। भाई दिन में तो इतना खूबसूरत लग ही रहा है, रात में तो पूछो ही मत यार। मतलब मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से उठ के बाहर जाने का। मतलब कोई यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली आके बैठ जाए ना तो इतना सुकून मिले। पहली बात तो आपको ठंड नहीं लगेगी, और इस टाइम पे यहाँ पे ठंड का मौसम है न्यूजीलैंड में। तो हल्की हल्की सी इस ठंड में जब हम रात को इन गीजर्स के वो जो हॉट वो थे ना स्टोन्स उन पे बैठे हुए थे, तो एक तो इतना सुकून मिल रहा था, लाइट्स एकदम इल्यूमिनेटेड थी, और भाई इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, मतलब पूछो ही मत। आप देखना जब नेक्स्ट व्लॉग आएगा आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और तब तक के लिए अगर आपको ये कैमरा जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरा 360 शूट कर रहा है, इसकी एडिटिंग भी इतनी ईजी है, और भाई कसम से इतना ज़्यादा मेरे को आराम मिल रहा है ना जब से मैंने ये कैमरा लिया है। मेरे सारे शॉट्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, कुछ भी मिस नहीं हो रहा। अगर आपको ये कैमरा लेना है तो मेरे बायो में इसका लिंक है, और ऑब्वियसली अगर आप मेरी लिंक यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा। सो कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय।